Now, for safety on board, we have safety officer, we have safety committee. So the objectives here will be who's the safety officer, what's the role and access areas, working conditions. What is the safety committee on board ship? What is the role of safety committee? What are the contents of safety report? So your ship safety officer is an officer on board designated by master in agreement as per the company procedures, and the safety officer handles your important issues related to ship and crew, that is safety and health. So he acts as a safety advisor on board and ensures that all requirements related to health and safety are met. So he'll be doing risk assessment and make recommendations to master regarding health and safety and apprise your safety committee of the same. So the duty of safety officers is to look out for potential hazards and means of preventing incidents on board and make reports for near miss or any accident which has taken place, and then he'll have play cards to be made for the crew members on board and the video presentation for the crew and officers on board. So the list of things that safety officer must consider or working environment and condition, that is vary according to design and ship, the type of the ship. So he'll ensure that all means of access such as ladders, stairs are in safe conditions. The lighting is proper, no obstructions. Warning notices are put the access areas, or maybe the warning is area when certain things have been removed for maintenance. Then access for both transit and working purposes are well lit. No obstructions are there and they are safe. Plus, proper securing arrangements to be made of gear and equipment which are in access areas. The guardrails should be in good condition. They should be secure and in place. In case it is broken, then the mark it should be discussed in the safety committee meeting, and the plans to restore these kind of guardrails at the next available opportunity should be made. Your fixtures and fittings that cause potential hazard to be painted and marked, whatever color you have for danger and all that should be marked there. And the working environment should be safe for entry and without any obstruction. All levels of area must be adequately lit when you are entering that area, and plus that area should be well ventilated. So the ventilation should be basis your SOLAS requirements. So a basis SOLAS requirements, if you're going to pump room, the changes of air in the pump room should be at least 20 times per hour. The changes in of air in the tank should be at least 30 times per hour. And the changes in any toxic vapors in the tank should be 45 times per hour. Similarly, if you have a duct keel or any void spaces where you are making entry, you don't have any fixed installation for ventilation, then the changes should be 16 times per hour. And if you have fixed installation for ventilation there, these duct spaces, then it should be 8 times per hour. So that you have to remember in SOLAS. Just telling you because sometimes they ask in orals about how the ventilation is done. Now that area should be clear of all your unwanted items like your oil racks, oil spills, or any kind of paper or any waste, so that doesn't catch fire. Your unnecessary dangerous goods and substances which are left in areas or those not stored correctly, they should be covered there or kept in space, or the distance between the DG goods should be as per IMDG requirements.
All your loose tools, stores, and similar items to be kept in dedicated spaces and secured properly, because otherwise they'll move around with the rolling and pitching. All machinery system to be properly guarded. All necessary operating instructions should be clearly displayed. All required safety signs to be clearly displayed. So whenever you're working maybe aloft or working in the tank or any other space, the permit to work to be taken. That will be taken only after risk assessment. All crew members to be wearing PPE and proper equipment to be used. So the PPE used should be in good condition and to be used properly. So whenever you have a defective equipment or machinery system, then you have to rectify it. If you have cadets coming here on board, they should be supervised. Now this happened in one of the MSC ships. This happened, I think, 2 years back. A new cadet had joined. The next day he was sent in the hold. It was raining. Nobody sent with him. So when he was going down the steps, he slipped. Was the gloves, they became wet because it was raining. They're having a party on board, so he had gone alone. No one sat with him. So he slipped down and banged his head and collapsed and expired. He was dead there. सर ऐसा एक इंसिडेंट 4 पिक टैंक का भी हुआ था ना, चीफ ऑफिसर ने शायद 2 कैडेट्स को अंदर भेजा था या फिर बोसन ने भेजा था एंड और फिर बाद में उसको मैनहोल बंद कर दिया गया था। मैं वो बताता हूँ क्या है, वो केस बताऊंगा, वो SCI का था, वो मैं बताता हूँ। पहले ये वाला बता रहा हूँ जो रिसेंट हुआ था। ये जो केस बता रहे हो वो 8 पीक टैंक का हुआ था। दैट वाज बहुत साल पुरानी बात है, वो 30-35 साल पुरानी बात है। अभी वाला जो केस बता रहा हूँ, रिसेंट वाला, वो बता रहा हूँ। तो वो स्लिप कर गया, नीचे गिर गया। वो कोई कह रहा था मास्टर ने भेजा, कोई कहता सेकंड ऑफिसर ने भेजा। तो फाइनली पता लगा सेकंड ऑफिसर भेजा, मास्टर ने भेजा। और सेकंड ऑफिसर लोग भूल भाल के पार्टी कर रहे हैं। 3 घंटे बाद वो बाकी कैडेट पूछ रहे, सर वो आया ही नहीं, दिख नहीं रहा है, कहाँ है? तो फिर उसको रियलाइज हुआ, बंदे भेजे, देखा मरा पड़ा है नीचे। तो ये गलती उन लोगों की थी। इनएक्सपीरियंस कैडेट है, सेकंड डे है, उसको होल्ड में भेज दिया अकेले विदाउट सुपरविजन, और वो मर गया। अब एक और केस हुआ था SCI में। अब मेरे कैडेटशिप के पहले, बिकॉज मैं कैडेट था 81-82 का, तो कितने साल हो गए? 40 साल हो गए ना। 81 की बात कर रहा हूँ मैं, 81-82 के टाइम की बात है, उससे पहले होगा। 40 साल हो गए। उस टाइम ये ISM और ये सब कुछ था नहीं, ठीक है। उस टाइम कोई चेक लिस्ट और ये सब होती नहीं थी, थोड़ी बहुत होती थी SCI में, बट वो भी नहीं कोई करता था, सिर्फ पेपर में टिक कर देते थे, एक्चुअली कोई करता नहीं था। तो चीफ ऑफिसर पोर्ट में था, मतलब जहाज पोर्ट में था, और चीफ ऑफिसर अपना कुछ काम कर रहा था। कैडेट्स को बोला भी 8 में कुछ काम है, तो चीफ ऑफिसर को पूछते, सर हम छोड़ली जाएं? कह रहा पर काम खत्म करो फिर जाओ। तो सवेरे की बात है, कैडेट बोलते हैं ठीक है सर, हम काम खत्म करके जाएंगे। तो अभी नाश्ता था, कुछ खाया नहीं, सिर्फ तीनों लोग चले गए 8 में। और उन्होंने कहा कौन बाहर रहेगा, सब अंदर घुस जाते हैं। नॉर्मली कहते थे बाहर रहो, एक कभी कुछ गड़बड़ हो तो बता देना। बोला नहीं नहीं, तीनों घुस जाते हैं, वे जल्दी काम खत्म करके भागेंगे। तो आप भी खोल खाल दिया, मैनुअल चले गए, दे वेंट इनसाइड और अपना काम कर रहे थे। अब 8 में पानी भी लेते थे। तो उस टाइम कारपेंटर होता था जो इंचार्ज था वाटर का। वी केम टू चीफ ऑफिसर अपना कुछ कैलकुलेशन कर रहा था। पूछा भाई सर पानी ले लूं वहीं, भर दूं? वो अपना कंप्यूटर में लगा होता, हाँ हाँ भर दो यार, भर दो यार, क्यों बार बार क्यों पूछते हो, जाओ भरो। उसने कोई रियलाइज ही नहीं किया अपना काम कर रहा है। वो कारपेंटर गया पीछे, देखा मैनुअल खुला हुआ है, कोई आसपास नहीं, नीचे झांका ऊपर झांका, कुछ दिख नहीं रहा है, कोई जूता वूता कुछ नहीं पड़ा है। कुछ आवाज दी किसी को, उसको सुनाई नहीं दिया कुछ। उसने दरवाजा तो मैनुअल बंद कर दिया, पानी लेना शुरू कर दिया। अब चीफ ऑफिसर गया नाश्ता वाश्ता खाने के लिए, 1-2 घंटे बाद आराम से गया। अब वो
इधर नाश्ता खा रहा, फिर सोचता है अरे भाई कैडेट लोग आए नहीं खाना खाने, किधर गए भाई, वो आए नहीं। वो तो कह रहे थे श्योर लीव चले जाएंगे जल्दी काम करके, पता नहीं कहाँ चले गए। सडनली उसको रियलाइज आया कि हाँ भाई कैडेट आए ही नहीं है। और फिर मैंने पानी लेने के लिए भेज दिया और वो पानी भरना शुरू कर दिया कि नहीं किया पता नहीं। उसने कारपेंटर को बुलाया, अरे 8 पीक में पानी लिया क्या? कहता हाँ सर, वो तो ओवरफ्लो हो गया, इतना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, ओवरफ्लो हो गया। बस इसका दिमाग खनका, वो भागा उधर कारपेंटर को लेके, जल्दी खोल, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। मैनुअल खोला, वो तीनों की वहां हाथ ऊपर फंसे हुए, बॉडी थी, नाखून वाखून सारे निकल गए थे, वो खरोच रहे थे, खोलने की कोशिश कर रहे थे, तीनों मर गए। ये बॉडीज देख के वो पागल हो गया चीफ ऑफिसर। फाइनली उसके क्या हुआ कैरियर का कुछ पता नहीं। तो ये सारे इंसिडेंट हुए थे पहले, जब अच्छे खासे बंदे मर मरा गए थे। अब एक और हुआ था, एआरआई का कैडेट था, दिस हैपेंड 1.5 years बैक, और दिस वाज इन फ्लीट। उसमें ये कैडेट मर गया था। केस था कि एनक्लोज स्पेस एंट्री थी, तो जो सुपरवाइजर क्या बोलते हैं, सर्वेयर नहीं, अपना जो सुपरिटेंडेंट है कंपनी का, या डीपीएच उसको कहते हो, उसने कप्तान को फोन किया, भाई ये फोटो लेनी है। वो लैडर एक आता है इसमें, ऑस्ट्रेलियन लैडर, उसकी फोटो लेनी है। अब ये बल्क कैरियर था, कोयला लोड करता, तो ऑस्ट्रेलियन लैडर की फोटो लेनी है। तो फोटो लेनी है तो कप्तान कहता है सर लोडिंग चालू है। कहता है क्या फर्क पड़ता, तुम लेके मुझे भेज। मैसेज वैसेज कुछ नहीं डाला उसने, सिर्फ फोन पे बोल दिया। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं ये सुपरिटेंडेंट लोग, कोई मैसेज डालते नहीं, कहते भाई ऐसा करो, कुछ गड़बड़ हो तो हाँ बोल सर, देंगे, हमने तो ब्लैक एंड बोला ही व्हाइट नहीं। में कोई नहीं देता। ना ना, उनको पता है गड़बड़ है, तो वो कहते हैं यार हमें नहीं करवाना, तुम ऐसा करो, तुमको करना है कि नहीं करना है, या तो तुम साइन ऑफ की तैयारी करो फिर अगले पोर्ट में। कप्तान को धमका देते हैं। कप्तान कहता है ठीक है भाई, मना करेगा तो साइन ऑफ करा देंगे। उसे चीफ ऑफिसर बोला है, चीफ ऑफिसर तू यार काम कराइए। चीफ ऑफिसर बोला कैरेट ये तू काम कर। कैरेट पूछता सर कब करें, अभी कर लूं, अभी तो क्रू भी है। कहता ना ना, टाइम क्यों वेस्ट करना, एक फोटो ही तो लेनी, और करना क्या है। ऐसा करना जब क्रू ऑफ हो जाता है ना 6 बजे, तुम उस टाइम चले जाओ वॉकी टॉकी लेके, मैं तुमको मॉनिटर करूंगा, तुम चले जाके फोटो लेके, बस फोटो ही तो लेनी और करना क्या है, 2 मिनट का तो काम है। कहता ठीक है। अब वो क्या है कि 6 बजे जब क्रू ऑफ हो गया तो ये चला गया कैडेट अपना वॉकी टॉकी लेके, ओल्ड पे गया, नीचे आया, फोटो खींच, बोला कि सर मैं इस प्लेटफॉर्म में पहुंचा हूँ, यहाँ हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उसके बाद आवाज बंद, कोई आवाज नहीं। तो चीफ ऑफिसर हेलो हेलो कहाँ है, क्या बे, क्या क्या कर रहे हो, क्या ये वो कुछ बोलता रहा, कोई जवाब ही नहीं आया। फिर घबरा गया। तो चीफ ऑफिसर क्या किया, वो निक्कर ही पहना हुआ था, चप्पल पहनी थी, वो वही पहन के भाग लिया, किसी को कुछ नहीं बताया, वो भाग लिया टैंक की तरफ, वो होल्ड की तरफ। अब वो कप्तान 1 घंटा हो गया, ये चला गया, कुछ हुआ नहीं, कुछ पता नहीं। 1 घंटा या आधा घंटा बाद उसने फोन किया, घंटी बजाई कप्तान ने चीफ ऑफिसर को भी। अब लोड इंडिकेटर चालू किया कि नहीं, ये वो फोन करने के लिए उसको पूछना था, उसको लोडिंग क्या कंडीशंस होगी ये सब। तो ही डिडंट रिस्पॉन्ड। तो फिर इधर उधर फोन किया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो वो नीचे आया कप्तान ढूंढते हुए, रास्ते में उसको बोसन मिला, बोला अरे चीफ ऑफिसर को देखा, कहता हाँ सर वो चप्पल में आगे डेक पे भाग रहे थे। तो चप्पल में डेक पे भाग रहे थे, ये क्या चक्कर है, किस तरह भाग रहे थे? कहते इस तरह भाग रहे थे। तो बोला चलो भाई ऐसा करो, तुम सारे तैयार हो जाओ, अब बॉयलर सूट में फटाफट आ जाओ। सबको बुला लिया, अब ऐसा करो चलो चले ढूंढे चीफ ऑफिसर कहाँ गया। तो उसको याद आया ये चीफ ऑफिसर भागा तो वहीं होगा जहां वो बोला था ऑस्ट्रेलियन लेटर की फोटो खींचनी। जो ऊपर गए, ऊपर से देखा, बोला चीफ ऑफिसर भी गिरा पड़ा है, कैडेट भी गिरा पड़ा है, दोनों ही नीचे गिरे पड़े हैं। तो एनक्लोज स्पेस एंट्री ड्रिल साउंड किया, अलार्म, सब भाग के आए और एससीबीए पैन के नीचे भेजा। और सारा जो एनक्लोज स्पेस एंट्री का जो ड्रिल होता है, नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर ये वो करके लेके आए। चीफ ऑफिसर को ऊपर निकाला, उसको सांस चल रही थी, बच गया वो, कैडेट तो मर गया। तो ये सारे केसेस कब होते हैं, जब सेफ्टी नॉर्म्स को
एरर नहीं करते। मतलब एनक्लोज स्पेस सेफ्टी सब जानते हैं, कैरेट भी जानता था, कई बार ड्रिल कर चुका है, उसने एयर आई में किया होता ड्रिल, उसने प्ले में भी पार्ट लिया था, एनक्लोज स्पेस एंट्री का जो एनुअल प्ले होता है उसमें भी पार्ट लिया था, और एयर आई के पास उसकी रिकॉर्डिंग भी थी। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने फोन किया था एयर आई को कि भाई तुम्हारा ये बंदा गया है, तुमने उसको ट्रेनिंग दी कि नहीं की? उन्होंने कहा हमारे पास प्रूफ है। और चीफ ऑफिसर तो भाई इतना सीखा हुआ है एनक्लोज स्पेस एंट्री क्या होता है, कप्तान को पता हुआ है, तो फिर ऐसे कैसे हादसा हो गया? मतलब ये सारे कोर्सेज बेकार है। आप सारे कोर्सेज करने के बाद भी मनमानी करते हो कि अपने आप अंदर घुस जाओ और रिस्क असेसमेंट की लेनी देनी ऐसी तैसी साइड में रखो, कागज में लिखो, करो अपना मनमर्जी का। ऐसा ही होता है क्या जहाज में आपके? है? यही होता है आपके जहाज में? नो सर। नो सर। अब ऐसा करोगे तो ऐसे ही भरोगे। हैं? अगर आप भी ऐसा करोगे तो ऐसे ही भरोगे ना। चीफ ऑफिसर जब कैडेट में ऐसा सीखोगे तो चीफ ऑफिसर में भी वैसा ही करोगे। अब चलता है, जान जाए पर वचन ना जाए, सीधी बात। जान जाए पर वचन ना जाए, जान को जाने दो, क्या फर्क है? चलो आपको एग्जाम्पल सारे बता दिए, अब आगे करते हैं। तो उसकी नेक्स्ट ड्यूटी जो है टू चेक स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एंड कंपनी सेफ्टी प्रोसीजर्स ऑन शिप टू बी कंप्लाइड विद and ensure that all safety procedures are provided by publications and company, they should follow it। but करता कोई नहीं है। आपने एग्जांपल देख लिया, 1.5 साल पहले की बात है, और फ्लीट में इतनी डेथ्स हो चुकी हैं कि उनको एनक्लोज स्पेस एंट्री का उनको सर्टिफिकेट अब मैंडेटरी बना दिया है। उनको कोर्स करना है सभी लोगों को एनक्लोज स्पेस एंट्री का, और हम पार्टली प्रैक्टिकल हम कराते थे। एंग्लो ईस्टर्न उनको करा था थ्योरी, हम करा रहे थे उनको। एंग्लो ईस्टर्न वालों को भी भेज रहे थे, वो अपना थ्योरी अपने आप कर रहे थे, और ड्रिल हम करा रहे थे। वो कोरोना के पहले की बात है, अब सब कोरोना टाइम में सब बंद, 1 साल से तो सब बंद है। अदरवाइज आई थिंक 4-5 कंपनीज आ गई थी एयरआई में जो एनक्लोज स्पेस एंट्री ड्रिल करवा रही थी। तो पीछे में हमारे छतरपुर में रखा हुआ था वो पूरा सिस्टम, पूरा एक 2 कंटेनर को मिला के काट कूट के बनाया हुआ था। उसमें हम लोग ने ड्रिल करवाना था कि भाई इधर से आप एंटर करोगे, यहाँ धुआं है, यहाँ आग है, और एससी में पहन के सब जाएंगे इंक्लूडिंग मास्टर। तो मास्टर का भी मैंडेटरी था और बाकी सबका मैंडेटरी हो गया था। ऑल क्रू मेंबर्स, मास्टर, सबको करना था एनक्लोज स्पेस एंट्री ड्रिल, और वीडियो भेजना होता था फोटो खिंचा के, तब वो माना जाता था, नहीं तो उनको दोबारा आगे करना था। तो यही सब हुआ है बिकॉज people have not realized what are the extents of safety here। अब आपकी सेफ्टी कमेटी क्या है, रोल क्या है, कंटेंट्स क्या रिपोर्ट का? So in order to ensure that the ship and crew follow all safety procedures while doing work and maintain a safe working environment, a safety committee is formed on the ship under the chairmanship of master। So the safety committee comprises of safety officers, safety representatives, along with other competent person, and you can have more crew members included अगर आपको जरूरत पड़े तो। The sole aim of safety committee is to enhance your safety standards on board, to ensure that you all follow safety procedures and correct practices on board। I remember our time also, master जो जॉगिंग करता था वो निक्कर पहनी, शर्ट शर्ट भी नहीं, बनियान भी नहीं, निक्कर पहन के, चप्पल पहन के जॉगिंग करता था जहाज टैंकर पे। तो अगर कोई ऐसे देखेगा मास्टर को जॉगिंग करते हुए तो बाकी लोग भी सोचेंगे हम भी सनबेदिंग करें ऐसे, है ना। तो सेफ्टी प्रोसीजर तो इफ यू डोंट फॉलो बाय एग्जांपल, दैट मींस द मास्टर्स को एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन आस्क द अदर टू फॉलो। वही चप्पल में घूमेगा तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू फॉलो द सेम। So to ensure the safe working practices and standards are followed, they should not be compromised at any cost। So you have to improve the standards of safety by enhancing safety first attitude among the various crew members and make recommendations regarding enhancement of occupational health and safety measures on board। And
act as a representatives of the crew to address to concerns and queries to the ship management, inspect safety officers' records, take appropriate actions pertaining to occupational health and safety policies. Your safety meetings should be recorded in official logbook. Suggestions, progress, and actions to be taken. Ensure that your necessary safety tools and equipments are available to the crew members along with safety publications. And when you have accident reports, then you have to see whether they are accurate or not. So normally your safety meetings are held every month or maybe 1.5 months. These are the scheduled meetings. Unscheduled meetings are held whenever you have any near miss or an accident in the company or sister ships. There you will have unscheduled safety meeting. All records of committee are noted on official logbook. So safety committee is an important body on board and they have same powers under the regulation as those possessed by safety representatives. Now the minutes of meeting means a brief of what has happened in the meeting. Main points of the meeting should be recorded in reports for further action by ship and also by owners and managers. And these minutes of the meeting are recorded in prescribed format of the company. Now the report of the safety committee meeting, which will cover the activity areas for the month, that is the action, the status of previously reported safety issues, current reported safety issues and actions, repairs, maintenance, calibration, status, drills, training conducted and planned. Then your ship name, report number, date of meeting, when you started, when you ended, who were the participants of the meeting, who were absent in the meeting, why. The review of the previous meetings, opening comments, matters which are outstanding in the previous meeting, new matters which were discussed or observed on the ship during the past month. Then the action taken and the status of the observed matters, which are the safety equipment which are under repair or having maintenance done by ship staff, and which safety equipment have overdue maintenance, including calibration. Maybe O2 analyzer needs calibration. So that's very important on board. So that has to be discussed in the safety committee meeting because that has to be sent. Otherwise, if it gives error, then you'll have a problem. Then your emergency and pollution drills conducted, safety training conducted other than safety drills, safety training which are planned other than safety drills, any other business, and conclusion of the meeting. That was your safety committee on board. We'll talk of permit to work entry. Now this is a photograph of a person working aloft. So the introduction will procedures are adequate. Many jobs you have require a lot of care, and you have a lot of fatalities, incidents, and therefore you require a permit to work so that you know what work is to be done when and where. And this requires specified safety procedures in writing on a form which is issued to seafarers who are assigned work which may be hazardous. So a responsible person should access your work and
check for safety concerns in every stage of the work. These persons should sign the permit to acknowledge that they've understood the risk and the precautions which are required. So your examples of permit to work can be hot work, can be working aloft or overside. When you're going in enclosed space entry or confined space entry, when you're working on pressurized lines, when the electrical work requiring high voltages there, you require permit to work, or when you're working on heavy lift, or which the machinery which can start automatically, or work on machinery requiring isolation, these all require permit to work. So this should be issued in a planned and limited duration. It cannot be unplanned or unlimited. If the work is not completed in time, the current permit to work should be closed and the new permit should be issued, taking into account the various parties who are concerned with it. Permit should be only issued for more hazardous tasks and systems so that you can't have more complications here. This can be used for preventing accidents, reviewing safety procedures, training support, and it reduces your risk of safety because you ensure that people are aware of the hazards and take necessary precautions and they are competent to work here. It also ensures that your communication between the supervising and maintenance teams will be from your planning, preparation, job execution to handing over and restoring to normal operations. So this should be issued only by an officer who's experienced in work operation, and this should ensure that the checks are being properly carried out. So together with the person in charge, the person executing the job should sign the permit only when satisfied that it's safe for work to proceed, and then it should be closed formally by the officer. The master will countersign any these permits. So it will describe the work which is to be carried out, the location of work, date and time of work, the duration of work, who are responsible for the work, who are doing the job, identify which kind of hazards are there with the job, plan your checklist to identify, control or eliminate hazards, including locking of points of isolation, removal of undesired material and ventilation. It should also state necessary safety precautions to follow in a correct sequence. Should state the emergency procedure in event of an accident, signing for and subsequent cancellation of permit and making it live. So the crew or worker should acknowledge it and the emergency procedures and contact numbers should be given along with additional information or notes. So here you have a header, you have work to be done, period of validity, location, person in charge of the work, person performing the work, responsible officer, master's signature, the date and time. So here you have enclosed space entry, you have a take your space thoroughly ventilated or not, was it tested and found safe, rescue and resuscitation equipment available at entrance, responsible person in attendance or at entrance or not, communication arrangement between persons and entrance, those entering, access and illumination adequate, all equipment to be used to be an approved type. So when you're using your breathing apparatus, familiarity to use this apparatus is confirmed. It should be tested and found satisfactory. Machinery equipment to be removed from service, isolated from sources of power or heat. All relevant personnel to be informed. Warning notices to be displayed for the machinery or equipment. When you're doing hot work, the area should be clear of dangerous material and gas free. Ventilation should be adequate. Equipment to be in good order. FFA to be in good order. Other work, additional precaution, all to be mentioned. Then your certificate of check that I'm satisfied with the precaution to be taken and safety arrangements will be maintained the duration of work. And the work has to be completed and all persons under supervision, material and equipment have to be withdrawn. So that's your
permit to work system. We'll have some videos now. The rest we'll show later. Not much course for safety. It's all practical, so don't have to worry about safety part. Risk assessment and all that I'll do. What is risk assessment? That is the one tables you have to prepare. Risk assessment matrix and all that I'll be doing in detail. वही करना है, बाकी तो general knowledge है. Safety otherwise is general knowledge. What practically you're doing on board.